Today we shall learn about the conformation in case of the organic molecules, the various orientation which an organic molecule may assume by simple twisting or rotation about the carbon-carbon single bond are called conformations. The conformations of ethane, n-butane, and cyclohexane will be discussed in this lecture. You can see the example of ethane molecule having the 2 carbon. In sawhorse projection, we can write this ethane molecule like this, carbon in the front, and just behind this carbon number 1, there is carbon number 2 in the actual model. If below this plane, the plane of C1 and C2, the 2 hydrogens are like this, and the 2 hydrogen like this, and above this we have this CH bond and this CH bond. So 2 hydrogens are below on each carbon, and 1 hydrogen and the other hydrogen at above the plane in source projection. In actual model, the angle between these CH bond would always be 0, and that is why this would be the eclipse form. न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये C1 कार्बन जो है इसको फ्रंट में रिप्रेजेंट किया गया है, और सर्कल जो शो कर रहा है वो कार्बन नंबर 2 को शो कर रहा है। ये C1 कार्बन के बिल्कुल जो है बैक साइड पर है, जो कि अगर हम फ्रंट से देखें तो वो हमें नजर नहीं आएगा। इसलिए इस C1 कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन्स हैं उनको आप पिंक से जाहिर कर रहे हैं, और बिल्कुल ये जो रेड हाइड्रोजन्स हैं वो इन पिंक हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे हैं, जो कि हमें नजर नहीं आएंगे एक्चुअल मॉडल में। इसलिए इस CH बॉन्ड और उसके बिल्कुल पीछे जो CH बॉन्ड है उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 का एंगल होगा, यानी डाइहेड्रल एंगल 0 का होगा। इसलिए ये एंगल चूंकि बहुत करीब है और 0 का है, तो CH बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब है। इसलिए CH बॉन्ड और CH बॉन्ड जो है उनमें नॉट बॉन्डेड इंटरेक्शन पाई जाती है और रिपल्शन पाई जाती है। सो इस फॉर्म को हम सार्स में और न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको एज ए होल इक्लिप्स्ड फॉर्म या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहा जाएगा। नाउ वी कैन सी द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। यहाँ पर अगर आप देखें सार्स प्रोजेक्शन में, तो C1 और C2 की प्लेन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और उसके बिल्कुल अपोजिट बिलो द प्लेन 2 हाइड्रोजन आपको नजर आएंगी। इसी तरह एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पर उसके ऊपर वाली प्लेन पर मौजूद है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 1 पर 3 हाइड्रोजन को इस तरह ज़ेर किया गया है जो कि फ्रंट कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और फ्रंट कार्बन के पीछे जो कार्बन है उस पर, जिसको कार्बन नंबर 2 कहा गया है, उस पर भी 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं जिनको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। चूंकि CH और CH के दरमियान यहाँ, इसी तरह इस CH और इस CH के दरमियान ये जो एंगल है सेपरेशन का वो 60 डिग्री का है, तो इसको स्टैगर्ड फॉर्म कहा जाएगा। और एज कंपेयर टू द इक्लिप्स फॉर्म इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी इस वजह से ज्यादा होगी, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन वुड बी प्रेजेंट इन द staggered form due to the higher stability of this conformation. See here conformations of normal butane. The formula of the normal butane is like this. You can see this carbon, and on this carbon we have CH3 group represented by Me,
And on this carbon, we have CH3 group, which can be represented by Me. So by using the Newman projection formula, we can write this n-butane molecule like this conformation. This conformation is of eclipsed nature and called cis because the dihedral angle in between methyl, methyl, in between CH, 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 CH is equal to 0. Now, why it is called cis? Because the two methyl group, they are near to each other and they are at cis position to each other. That is why they are on the same side and near to each other. Just they are, one is behind the other. So the angle is 0. So it is called cis eclipsed form. This form is of the highest energy in all these conformation. See here, the two methyl groups, they are separated by the angle of 60 degree. This is actually the staggered form, and this is the Gauche staggered form because methyl groups, they are separated by 60 degree. So this staggered form is of lower energy. See here, this methyl group, the yellow spot, and this methyl group represented by yellow, they are at the angle of 120 from each other. Actually, this form is also eclipse form, but methyl groups, they are separated by the angle of 120. They are separated, and therefore the interaction between the methyl group is less as compared to this conformation. So the energy of this conformation as compared to this conformation would be less. So we represent this is the highest energy, but this is of higher energy. But the energy of this eclipsed form, also called anticlinal, the methyl groups are separated by 120, is of lower energy as compared to this cis eclipsed. See here the staggered form. The methyl groups, they are separated by 60 degree. And this is also the staggered form, but the methyl groups, they are separated from each other by 180 degree. They are far apart. So the non-bonded interaction between methyl is less as compared to the Gauche form. That is why this staggered transform is of the lowest energy, and most of the molecules of the n-butane would be present in this staggered transform, which is stable form. Come here to see the conformations of the cyclohexane. The conformation of the cyclohexanes can be represented like the chair conformations. You can see the chair conformation of the cyclohexane, and this is the other conformation of the cyclohexane in the chair form. They are in the rapid equilibrium with each other. So they are of the same energy. So they can convert rapidly from this conformation to this. This conformation can be converted into this at the room temperature. So they are of the same energy. Here we can see the two hydrogen bonds at each corner of the cyclohexane. So the bond which would be perpendicular to the plane of the ring would be represented by A and what called axial, and the bond which would be aligned with the plane of the ring
would be represented by E, mean equatorial. So there are total 12 hydrogen bonds on the cyclohexane, and we can write them like this. For example, this bond would be axial, and on this carbon, the other axial would be below the plane. This is above the plane. This would be below the plane, and come here. This would be above the plane. This would be below the plane. This axial bond would be above the plane, and this would be below the plane. The equatorial bonds, they are aligned with the plane of the ring. So they are lying same to the plane. So we can say they are also planar in nature. So we can represent, if this is aligned like this, the other would also be aligned equatorially. And on this carbon, this bond would be equatorial, this bond would be equatorial, this would be equatorial, this would be equatorial. They would also be alternate to each other. Similarly, we can see the axial and equatorial in this conformation of the cyclohexane. So all the carbon atoms, if they are represented with the help of the Newman projection, we can see the staggered conformation at the carbons of the chair form. So that is why the chair form is always more stable as compared to the other conformation, because the carbons, hydrogen bonds, they are staggered on all the 6 carbon atoms. See here, the boat form conformation of the cyclohexane. Here you can see the boat form conformation. This carbon, this carbon, this carbon, this carbon, the 4 carbons are lying in one plane, and the 2 remaining carbon, they are showing the flagpole here, and they are out of the plane. If we represent the boat form in the Newman projection, we will see all the projection in the eclipsed form. So that is why the boat form is of less energy, of higher energy and less stability as compared to the chair form. But if we twist this boat form into this form, we will get twist boat form. The twist boat form is of lower energy as compared to the boat form. बोट फॉर्म की एनर्जी जो है वो ट्विस्ट बोट फॉर्म से ज्यादा है और स्टेबिलिटी भी कम है, तो इसकी वजह ये फ्लैग पोल इंटरेक्शन है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोजन हैं, एक्सियल हाइड्रोजन हैं, वो फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस कन्फर्मेशन की शेप की वजह से फ्लैग पोल बनते हैं, और इनमें जो नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाती है। रिपल्शन बढ़ने की वजह से एज ए होल बोट कन्फॉर्मेशन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है और एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप इसी कन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट कर दे तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर जो एक्सियल हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन कम हो जाती है, रिपल्शन कम हो जाती है, और नतीजतन एज ए रिजल्ट ट्विस्ट बोट फॉर्म की जो एनर्जी भी कम हो जाती है। इसलिए
स्टेबिलिटी के हवाले से देखा जाए तो ट्विस्ट बोट फॉर्म इज ऑफ lower energy and higher stability as compared to the boat form. So flagpole interaction gets lessened and relative energy of the twist boat get lower than the boat form. Now see the actual structure we usually represent on the paper, the planar form of the cyclohexane. This planar form of the cyclohexane is associated with low stability relative to the other forms like chair, boat, and twist boat form. Now, why this is relatively less stable as compared to the conformational forms of the cyclohexane, because deviation from the regular tetrahedral angle of 109.5 occur if we write in this way. So this planar form would be associated with the deviation of the regular tetrahedral angle. That is why this is not the stable form. So this form would get puckered, would get deformed into the conformations, the more stable conformations like chair, like boat, and twist form. अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के केस में देखें, कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो साइक्लोहेक्सेन के किसी भी कार्बन एटम पर अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल ये बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है जो कि एक्सियल पोजीशन पर लगा हुआ है। तो एक्सियल पोजीशन पर होने की वजह से इसकी जो इंटरेक्शन जो है वो एस सी एच एक्सियल से भी है और एस सी एच एक्सियल से भी है। ये एक दूसरे के करीब होने की वजह से दो हाइड्रोजन्स की बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाती है और इस रिपल्शन के बढ़ने से एज ए होल इस कन्फर्मेशन की एनर्जी बढ़ जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सो वी कॉल्ड दिस इज द अनफेवरेबल 1,3 diaxial interaction and this would be associated with high energy। और इसके कंट्रेरी अगर हम ये देखें कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बजाय एक्सियल पोजीशन के होने के इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गए है, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, अकोमोडेशन इसकी इजी हो जाएगी और इस बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की इंटरेक्शन एस सी एच और एस सी एच के साथ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी और एज ए होल इस कन्फर्मेशन की जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो कि बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इस कन्फर्मेशन की एनर्जी कम से कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम कन्फर्मेशन एनालिसिस में सम अप करें तो हम ये देखेंगे कि चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ट्विस्ट बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी से और ट्विस्ट बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी बोट फॉर्म से ज़्यादा होती है।